Myself Dr. Mamta. Today's topic is thyroid gland. It is the largest endocrine gland. It is bilobed, two lobes, right and left lobes, and they are connected by a bridge of tissue which is known as thyroid isthmus, and it is present on the anterior aspect of the neck, anterior to the trachea. So the thyroid gland ये largest gland होगी, बाइलॉब्ड होंगे, राइट और लेफ्ट लॉब्स होंगे, और वो किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे? थ्रू द थायराइड इस्थमस. और कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक. दिस डायग्राम शोज थायराइड ग्लैंड. दिस इज थायराइड ग्लैंड. इट डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ pharyngeal duct located in front of the larynx, descend down to the anterior part of the neck, and it is highly vascular, has rich blood supply which is maximum among all endocrine glands. So ये कहाँ located होगी? In the front of larynx, descend down to the anterior part of the neck, highly vascular होगी, और has rich blood supply which is maximum among all the endocrine glands. Innervated by autonomic nerves, thyroid gland develops during 3rd week of gestation. Thyroid hormone synthesis begin at the about 11th week of gestation. जो थायराइड हार्मोन है इनका सिंथेसिस कब स्टार्ट होगा? 11th वीक ऑफ जेस्टेशन. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड. वेट इज अराउंड 15 to 25 gram. It has million of acini which are also known as follicles. Their diameter is 50 to 500 micrometer, and they are lined by cuboidal epithelial cells which are also known as follicular cells. Follicular cavity is filled with a colloid substance which is known as thyroglobulin, which is secreted by the follicular cells. तो जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे कंपोज्ड होगी? बाय द एसिनाई और फॉलिकल्स. और जो एसिनाई और फॉलिकल्स हैं वो किसके थ्रू लाइन पाइड होते हैं? कुबोइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके थ्रू वो लाइंड होते हैं. और जो फॉलिकुलर कैविटी है उसमें क्या फिल होते हैं? कोलॉइड सब्सटेंस विच इज नोन एज थायरोग्लोबुलिन. This is colloid substance. It is filled by thyroglobulin, and these are follicular cells. Thyroglobulin is a glycoprotein. Its molecular weight is 6,60,000, synthesized in the thyroid cells, and it is secreted into the colloid by exocytosis of granules. During inactivity, the cells are flattened by the storage of colloid in the lumen of thyroid follicle. During activity, the vascularity increases and the cells become columnar. These are flattened cells. जब भी thyroid cells है वो inactive होगी तो ये जो cells हैं वो कैसी है? Flattened हैं. When it becomes active, these cells are cuboidal. These are follicles. In between follicles there are parafollicular cells are present. Now hormones which are secreted from the thyroid gland. There are 3 hormones which are secreted from thyroid gland. The first one is T3, triiodothyronine. Second is T4 which is known as thyroxine, and third one is calcitonin. Thyroxine, which is also known as T4, it is in more amount, around 90%. T3, which is known as triiodothyronine, its potential is 4 times more than that of T4 thyroxine, and third one is calcitonin. T3 and T4 are iodine containing amino acids, and they are secreted by the follicular cells. Calcitonin in detail we will study in the parathyroid and calcium metabolism. These hormones are synthesized in the colloid by iodination and condensation of tyrosine molecules and bound by peptide linkage in the thyroglobulin. These hormones remain bound to thyroglobulin until secreted. तो जो hormones हैं वो कहाँ बाउंड रहेंगे? थायरोग्लोबुलिन में बाउंड होंगे जब तक कि वो उनको सिक्रीट नहीं होंगे तब तक.
When they are secreted, colloid is ingested by thyroid cells and peptide bonds are hydrolyzed, discharging free T4 and T3 into the capillaries. The third one hormone is calcitonin, which is secreted by parafollicular cells. Already मैं आपको बता चुकी हूँ वो कहाँ present होते हैं parafollicular cells, between the follicles. Parafollicular cells और C cells वो क्या secrete करेंगे? They secrete calcitonin and it play an important role in calcium metabolism. ये calcium metabolism क्या करेगा? It decreases the calcium level. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. जो थायराइड हार्मोन है T3 T4 उनका सिंथेसिस कैसे होगा? इट टेक प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन फॉलिकुलर कैविटी. कहाँ पे हो रहा है इनका सिंथेसिस? इन द थायरोग्लोबुलिन, जो कहाँ प्रेजेंट है? इन द फॉलिकुलर कैविटी. एंड आयोडीन एंड टायरोसिन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स. दो की एलिमेंट्स क्या क्या हैं और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए? आयोडीन एंड tyrosine. There are various steps in the synthesis of thyroid hormone. The first one is iodine metabolism. It is very important. Iodine is the raw material essential for the thyroid hormone synthesis. तो iodine है ये क्या है? Essential component है किसके लिए? Thyroid hormone synthesis के लिए. The sources of iodine are sea fish, bread, milk and vegetables. About 500 microgram of iodine is ingested daily in the food. Iodine is consumed through the diet. The daily requirement of iodine is 100 to 200 microgram and iodine gets converted into iodide and absorbed from the GIT. Normal plasma iodide level is 0.15 to 0.13 microgram per deciliter. Normally about 120 microgram per day of iodine is taken up by the thyroid gland for thyroid hormone synthesis. The second one step is iodide trapping और iodine pump. कि जो iodine है, जो iodide बना है वो iodide cells में कैसे जाएगा? thyroid cells में वो कैसे enter करेगा? After absorption from GIT, it is taken up by thyroid by active transport, which is known as iodide trapping or iodide pump, and it occurs against the electrical gradient. Absorption होगा GIT के थ्रू, तो क्या होगा? thyroid cells हैं वो उस iodide को अपनी अंदर cells में ले लेंगी. किसके थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और ये किसके अगेंस्ट में होगा? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Perchlorates and thiocyanate are competitive inhibitors of iodide pump, so they can be used as anti-thyroid drugs. जो iodide pump है उसको inhibit करेंगे कौन? Perchlorates and thiocyanate. Also they are inhibited by the excess of iodine and they are stimulated by the TSH. TSH, it is thyroid stimulating hormone which is secreted from the anterior pituitary which control the thyroid gland. तो फर्स्ट स्टेप क्या था? आयोडीन मेटाबॉलिज्म. सेकेंड इज आयोडाइड ट्रैपिंग एंड थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड. Iodide must be oxidized to elementary iodine because only iodine is capable of combining with tyrosine to form thyroid hormones. The oxidation of iodide into iodine occurs inside the follicular cells in the presence of thyroid peroxidase. In absence or inactivity of thyroid peroxidase stops the synthesis of thyroid hormones. अब क्या है? जो आयोडाइड है उसको फर्स्ट ऑक्सीडेशन होना है, उसको किस में कन्वर्ट होगा? आयोडीन में वो कन्वर्ट होना चाहिए और देन वो ही आयोडीन किसके साथ बाइंड करेगी? टायरोसिन के साथ बाइंड करेगी और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस करेगा. तो दिस स्टेप इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड. ये फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है फॉलिकुलर सेल्स में. और किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा. अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी, इफ देयर इज एब्सेंस और डेफिशिएंसी और इनएक्टिविटी ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज, तो क्या होगा? रिजल्ट ऑफ दिस
स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि थायराइड पेरोक्साइडेज एब्सेंट होगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड नहीं हो पाएगा, आयोडाइड है वो आयोडीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण आयोडीन है वो टायरोसिन से बाइंड नहीं करेगी और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस नहीं होगा। The next step in this is iodination of tyrosine. In this, there is combination of iodine with tyrosine. It take place in thyroglobulin. जो सारे स्टेप्स हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, थायरोग्लोबुलिन में। सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, थायरोग्लोबुलिन में हो रहा है। It take first iodine is transported from follicular cells into follicular fluid where it binds with thyroglobulin. And this step is known as organification of thyroglobulin. Then iodine binds with tyrosine. This step is accelerated by the enzyme iodinase which is secreted by the follicular cells. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आयोडीन है वो किसके साथ बाइंड कर रही है, टायरोसिन के साथ बाइंड कर रही है और ये सारे स्टेप कहाँ हो रहे हैं, थायरोग्लोबुलिन में हो रहे हैं। फर्स्ट आयोडीन है वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होगा, फॉलिकुलर फ्लूइड में आएगा, जहाँ ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड करेगा और ये जो स्टेप है इट इज नोन एज ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। देन क्या होगा, जो आयोडीन है वो बाइंड करेगा टायरोसिन से और दिस इज नोन एज आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन एंड दिस स्टेप इज एक्सीलरेटेड बाय द एंजाइम आयोडिनेज, जो कहाँ से सीक्रेट होगा, फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स। Next is coupling reaction occur in several stages. First, tyrosine is iodized first into monoiodotyrosine MIT and later into diiodotyrosine. One molecule of DIT and one molecule of MIT combine and they form T3 triiodothyronine and two molecule of DIT combine and they form T4. First इसमें क्या हो रहा है, टायरोसिन है वो आयोडाइज्ड, फर्स्ट किस में होगा, मोनोआयोडोटायरोसिन में एंड सेकंड किस में हो रहा है, लेटर ऑन डाईआयोडोटायरोसिन में। तो जो वन मॉलिक्यूल ऑफ DIT है एंड वन मॉलिक्यूल और MIT कंबाइन करेगा एंड इट फॉर्म T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ DIT कंबाइन करेगा, इट फॉर्म T4।